को सीखने का एक और भी मकसद है। और वो मकसद क्या था? वो मकसद ये समझना था कि चूंकि खुदावंद उनके साथ था, लेकिन सिर्फ एक शख्स ने, जो कि उनकी आर्मी का ना तो सिपा सलार था, ना लीडर था, ना कोई बड़ा इंसान था, लेकिन एक सिपाही था। उस सिपाही ने क्या किया कि खुदावन के हुक्म की तामील नहीं की और नाफरमानी की। जब खुदावन ने कहा कि मखसूस की वो चीजें में से जंग के फतह के बाद जो भी चीजें वहां पे आपको मिले, आपको नहीं लेनी, तो उसने नाफरमानी की, उसने खयानत की, उसके दिल में लालच आया और उस सिपाही ने उन चीजों को चोरी कर लिया जो कि खुदा को सख्त नापसंद हुआ। और खुदा ने इस नाफरमानी की सजा देने के तौर पर आगे की जंगों में, आगे के मामलात में उनको शिकस्त देना शुरू कर दी। तो हमारे सीखने का और यशवा की किताब के समझने का, उसको पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि इस किताब में हमें सिर्फ जंगों की फतह नहीं मिलती, बल्कि खुदावन मुझे और आपको आज ये सिखाना चाहता है कि हमें खुदावन की फर्मा बरदारी करनी है। जिस हुक्म का, जिस बात का वो कहता है कि उसको मानो, उसको मानना है। और जिसको वो मना करता है उसको नहीं मानना, वरना खुदावन हमारे साथ नहीं रहेगा। अगर हम उसके साथ रहना चाहते हैं तो हमें ताबेदारी करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यशवा ने नहीं की थी, लेकिन उसके एक सिपाही ने सिर्फ खयानत की थी, तो खुदावन ने उसका बदला पूरी कौम को दिया। तो खुदावन जो है अपनी वादों का सच्चा है, वो पासदारी करता है, अपने अपने सारे वादों को रखता है हमेशा। लेकिन वो हमसे भी चाहता है कि हम उसके हुक्म को माने, उसकी फर्माबरदारी करें और उसके सारे हुक्मों की तामील करें। जिस चीज का मना करता है उसे मना रहें, और जिस चीज को करने को कहता है वो करें। तो फर्माबरदारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें कायम रखनी है, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारे साथ रहे। So, chapter 7 is all about how Joshua hears from the Lord, and the Lord tells him, the Israelites have sinned. They've taken some of the devoted things, and you are going to sanctify the people, and we will find the devoted things. And it's the story of how he does this. And then Joshua and all Israel with him took Achan, son of Zerah, with the silver, the mantle, and the bar of gold, with his sons and daughters, his oxen, donkeys, and sheep, and instead all they had. And they brought him to the valley of Achor. And there Israel stoned him to death and burned everything with fire. Well, we don't do that anymore. We don't stone people to death for this. But what we do is seek the Lord and seek his forgiveness. This was serious. And the point was, this minor soldier disobeyed, and it brought disaster on all the nation of Israel. The next example of disobedience is going to be from the leadership of Israel. And they are going to disobey, and it's going to bring bad news onto Israel. फिर इसके बाद क्या होता है कि अक्कन बिन करनी को जब उसका कोरा निकलता है कि चोरी इसने की है, हालांकि वो मामूली सा सिपाही था। तो खुदावन ने क्या कहा कि इसने जो सोने की ईंट ली थी, क्योंकि उसने सोने की ईंट और चादर को चोरी किया था। तब यशवा और सब इसराइल ने जारा के बेटे अक्कन को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को, जो उसके बेटों और बेटियों को, क्या किया इसके बदले में? उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों और रेवड़ को और जो कुछ सगा सबको लिया, और वादी अकूर में उनको ले गए। और यशवा ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया? आज खुदावन तुझे दुख देगा। तब सब इसराइलियों से संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया, उनको पत्थरों से मारा। आज के दौर में ये सजा तो उस वक्त दी गई थी कि किस तरह से उन सारी चीजों को बाहर निकाला, उसके सारे रेवड़ गड्ढे को बाहर निकालकर पत्थरों से उनको जो है संसार कर दिया। तो आज के दौर में हम जो है इस तरह की सजा तो नहीं देते, हम माफ करते हैं। लेकिन खुदावन हमें ये सिखाना चाहता है कि हम खुदावन के हुक्म की
फर्मा बरदारी करें। आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ तो एक मामूली से सिपाही ने जो है ये गुनाह किया था, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि अब लीडरशिप में, यानी कि जो खुदावन के लोग थे, चुने हुए थे, जो आगे लगे हुए थे, देखिए उनसे भी गुनाह सरजद होता है। So, looking at the outline, I don't have everything here, but chapter 6, they capture Jericho. Achan takes some of the stuff. Chapter 7, they try to take Ai and they get defeated. And that's when they find out that Achan has stolen some of the stuff. In chapter 8, they take care of it. They take Achan and they kill him and his family in the field. And then they take Ai. So they're able to take these cities by chapter 8. In chapter 9, we get a new story. The surrounding peoples. So the Israelites take these cities, and the cities around hear about it. They get word, oh my gosh, who are these Israelites? Now, when all the kings who were beyond the Jordan, in the hill country, and in the lowland along the coast of the Great Sea, all these places heard about this, they gathered together to fight Joshua and Israel. But the inhabitants of Gibeon heard what Jericho had done, what Joshua had done to Jericho and Ai. They did something different. Let's look at the map. तो आगे 6 और 7 बात के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने यरीहो को फतह किया और आगे किस तरह से अकन ने गुनाह किया और इस तरह से उसकी गुनाह का अजाला करके उनको संसार किया गया। और आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के बादशाह मुकाबले के लिए आते हैं यरूशलेम से, क्योंकि इनको पता चल गया था कि एक ऐसी कौम है जो कि हमारे मुकाबले के लिए आ रही है और वो फतह पे फतह हासिल कर रही है। तो मुख्तलिफ किस्म के बादशाह जो है यरूशलेम के मुहासरे के लिए आए, उनको जो है वो उनसे लड़ने के लिए आए। तो यहाँ पे इन्होंने एक अलग तरह से उनका मुकाबला करने की कोशिश की। Okay. So here's Bethel and Ai. Let me get rid of this. Here's Bethel and Ai. And here's Gibeon. But when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, they decided to play a trick. So that's only it's 7 kilometers from Gibeon to Bethel. It's about 7 kilometers. It is not very far. But what the Gibeonites did is they dressed up in old clothes, got some moldy bread, old bread, and they traveled to Joshua and they told him, we've come from a far, far land and we've heard of how you defeated Jericho and Ai, and we want to make a peace treaty with you. And this is where the disobedience comes from. यहाँ पे क्या Go होता ahead. है कि रबून से बैत एल का जो रास्ता है वो इतना दूर का सफर नहीं है। जबून से बैतेल का रास्ता जो है सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर का है। लेकिन
इस बार जो है इस मुल्क के बाशिंदे अलग तरह से जो है उन्होंने झूठ बोला और उनको अलग तरह से शिकस्त देने की कोशिश की। और यहाँ पे वो जब जबून के बाशिंदों ने क्योंकि सुना था कि उन्होंने यरू और अई से क्या क्या किया है, तो उन्होंने बहाना करके अपना जो है सफीरों का भेष बदला। सफीरों का भेष बदलकर पुराने बोरे और फटे पुराने हुए मरम्मत किए हुए कपड़े दिए और उनको शराब के मशकीतों पर अपने गधों पर लादा और अपने पाँव में पुराने पेवन लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले और उनके सफर का तोशा सूखी रोटी फफूंदी था, वो रोटियां ली और वो जिलजाल में हैमागा को यशवा के पास जाकर उससे इस्राएली मर्दों से कहने लगे कि हम एक दूर के मुल्क से आए हैं। हालांकि ये 7 किलोमीटर के सफर से आए थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला, भेस बदला और कहा कि हम एक दूर के मुल्क से आए हैं, तो अब हमसे अहद बांधो। उन्होंने कहा कि हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने इन हवाइयों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधे। So they acted like they were coming from hundreds of miles away, but they're actually just over the next hill. And they fooled him. And here's the disobedience. They come to Joshua and they make a treaty. Now Joshua, when they defeated Ai, his camp is down here. Let me put it up here. I'll show it to you. Right here. So he's camping here. He takes Jericho, camping here. He takes Ai, but he doesn't stay up there. He retreats to his camp down here. Gibeon, just up the hill, comes to him and convinces him that they're from far, far away. And this is the disobedience. They offer a peace treaty. They say they want to make a deal with Joshua, and Joshua does not seek the Lord. So I want you to see this pattern. When they took Jericho, Achan, a minor soldier, do not forget, Achan's just one little soldier. A minor soldier doesn't obey, and he brought defeat on all the Israelites because he didn't obey. Down here, the Gibeonites make a deal with Joshua, and he does not seek the Lord because the Lord was quite clear. Do not make treaties with the people in here. Your entrance into Canaan is part of my judgment on them, and I'm going to execute judgment on all the inhabitants of this land, and I'm going to use your army to do the judgment. But Joshua makes a deal without consulting the Lord. And so you have a minor character and then a major character. Both disobey the Lord. And this is the lesson that the book of Joshua is trying to teach us. No matter how you see yourself, whether you're minor or you're major, you have to obey. And even Joshua, as mighty a figure as he, did not seek the Lord. And that was a mistake. अब जीबोन के अतराफ से जो लोग भेस बदल के आए थे, जिन्होंने झूठ बोला था कि हम इतनी दूर सफर से आए हैं, उनको बताया था कि देखो, अपने जो है सारे तोशा खाने के पैमाने और हमारे कपड़े फट गए हैं, हमारे जूते फट गए हैं। तो ये सारी चीजें उनको जब यशवा को बताई तो क्या हुआ, यीशुआ ने जो है उनकी बातों पर यकीन किया और उनके साथ अहद बांधा, जबकि खुदा ने अहद बांधने से सख्त मना किया था कि वहां की कोई चीज ना लेना, ना अहद बांधना, ना किसी से कोई ताल्लुक में रखना है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि खुदा की सलाह के बगैर, खुदा के मशवरे के बगैर, खुदा से पूछे बगैर उन्होंने उनसे अहद बांध लिया और उनकी तोशा खाने में सिखाया, उनकी चीजों में सिखाया, उनके साथ अहद बांध दिया। अब ये वही चीज हुई है जो थोड़ी देर पहले
आपने देखा कि अकबर ने किस तरह से नाफरमानी की। हालांकि वो एक मामूली सिपाही था, एक छोटा कम दर्जे का सिपाही था, लेकिन उसकी नाफरमानी ने भी इतनी बड़ी जो है यशवा और उसके इसराइलियों को शिकस्त दिलवाई। तो यहाँ पर हमारे हमारे सामने हमें लीडर नजर आ रहा है, हमारे सामने रहनुमा है, एक बड़े दर्जे का बंदा। हम देख रहे हैं कि उसने भी वही जो है फेल दोहराया, उसने वही काम दोहराया, और उसने भी खुदा से पूछे बगैर अहद बांध लिया, खुदा से मशवरा भी नहीं लिया, खुदा की नाफरमानी की। तो यहाँ पर हमारे सीखने की बात यह है कि चाहे कोई खुदा का खादम हो, खुदा का बंदा हो, खुदा का फर्माबरदार हो, वो भी नाफरमानी कर सकता है, तो एक आम शख्स भी कर सकते हैं, तो खुदा के बड़े लोग भी, उसके मखसूस शुदा लोग भी नाफरमानी कर सकते हैं। सीखने की बात यह है कि हमें जो है खुदा की फर्मा बरदारी करनी है, खुदा से मशवरा लेके चलना है, उससे पूछे बगैर कोई काम नहीं करना। तो यहाँ पे यशवा ने भी यही किया, खुदा से पूछे बगैर उनका यकीन कर लिया और उनसे अहद बांध दिया। So here we are. So I want you to see he took 9 chapters to talk about the taking of Jericho and Ai, those 2 towns. And now the rest of the country he's going to take care of in 2 chapters. Chapter 10 is all about the taking of the southern part of Israel, which I will show you here. Taking all of this. And then chapter 11 will be taking the north from Bethel all the way up to Chatzor and Dan, taking that and does it in a chapter. Because what's important is not the capturing of the city, but the obedience. But the obedience. But the taking of the country does matter because it's God fulfilling his promises. He said he was going to give Abraham the country, and the book of Joshua is God fulfilling that promise. He kept his promise to Abraham and gave them all the land of Israel. It's not the way we would do it. It's not on our calendar, but it was on God's calendar, and he was faithful and he delivered. हम देखते हैं कि विश्वा की किताब के पहले जो है 9 बाब के अंदर किस किस तरह उन्होंने अई, हित्ती, अमोरी, कनानी, फरजी, यबूसी, इन सब लोगों को फतह कर किया, और किस तरह से बैतेल से जबून में आए तो किस तरह से उनको जो है इन सब चीजों का शिकार होना पड़ा। तो मेन चीज जो यशवा की किताब में हमें सीखने को मिलती है, यशवा जो है सिर्फ हमें ये नहीं जानना है, इस किताब में हमें ये देखना है तो वो किस तरह से सब जगहों पर, सब इलाकों में और सारी इस मुल्क के अंदर यर्दन के कब्जा करता गया। लेकिन हमें यशवा किताब से ये सीखना है कि किस तरह से उन्होंने खुदावन की नाफरमानी की और खुदावन से दूर हो गए। तो यहाँ सबसे मेन बात ये है कि हमें खुदावन की फर्मा बरदारी करनी है और खुदावन के साथ चलना है, उसकी बातों को मानना है, तो तब हम जो है कामयाबी की राह हमें नसीब होगी। आगे 10 और 12 आयत में भी मुख्तलिफ यरूशलेम को किस तरह से उन्होंने फतह किया, आगे हम देखते हैं। All right. So the story of taking the South, it's a famous story where the sun stands still when they pray and it keeps the sun in the sky so they can finish a defeat. And then the taking of Hatzor and the cities up north. And I'll let you read those. In chapter 12, he just lists all the cities they took. Why
would a list of cities be in Scripture? It's to show us that God fulfills his promises. This is a big deal. If God has told you he's going to do something and it still hasn't happened yet, the book of Joshua is written for you. It's to tell you, you think you know how God's going to answer the prayer, but we really don't know. But what we do know is that God will answer the prayer. It may not be in the way I expect, but he will answer the prayer. So I want you to see that God is faithful. Look, you're betting your whole life that God is going to be faithful to the word that he gave you. Kenneth and Maria have bet their whole lives and answered it. And God has taken them around the world. He's taken me and traveled me around the world. I'm just a little guy in Tulsa, but he's traveled me around the world. You do not know what God's going to do in your life. Obey and have faith. Obey and believe. God is going to fulfill his promises to you. He will. हम देखते हैं कि आगे के बाब में हमें हर उस शहर और इलाके का लिखा गया तफसील से फहरिस्त बनाई गई है कि एक के बाद एक, इसके बाद ये, उसके बाद वो पता करते गए। सारी लिस्ट आपको मिलती है 12वें बाब के अंदर, 11वें बाब में भी, कि किस किस तरह कौन कौन से शहर जो है ये यशवा ने फतह किए। लेकिन होता ये है कि हमारा मकसद ये जानना है कि उन्होंने किस तरह फतह किया, ये नहीं, बल्कि ये जानना है कि खुदावन जो है अपने वादों का सच्चा है। खुदावन ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें फतह दिलाऊंगा और तुम्हारे साथ हूंगा। मतलब खुदा ने अपना वादा पूरा किया। तो इसी तरह से जैसे मैं हूँ, सर कैनेथ है, डॉक्टर वेंस है, इस तरह से खुदा के काम को कर रहे हैं, तो खुदावन ने बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी जिंदगी में फहरिस्त होगी, जो आपने खुदा से मांगी होंगी, कही होंगी। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपने भी खुदा से कहे होंगे, लेकिन वो अब तक पूरे नहीं भी हुए। तो हमें इस चीज पर यकीन रखना है कि खुदावंद अपने ठहराए हुए वक्त के हिसाब से अपने मखसूस टाइम पर उन कामों को हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। हमें फर्मा बरदार रहना है, जैसे यशवा रहा, जैसे उसने खुदावंद की ताबेदारी की, फर्मा बरदारी की, इस तरह से हमने भी अपनी जिंदगी में वफादार रहना है, खुदावन का ताबेदार रहना है। अगर हम वफादार रहेंगे तो ही खुदावन अपने वादों को सच्चा करके हम पर साबित कर दिखाएगा कि वो वादों का सच्चा खुदा है, वो कायम रहने वाला है। तो हमें हमेशा इस चीज पर गौर करना है कि खुदावन जो है तभी फतह देगा जब हम वफादार रहेंगे और खुदावन की नाफरमानी नहीं करेंगे। तभी खुदावन अपने सारे वादों को तकमील हमारी जिंदगी में करेगा। So, chapter 12, like I said, is a list of all the cities that they captured, all the kings they defeated. And you can just see it. It's just a giant list. And we get to read it. And then in chapter 13, they divide the land. So they've captured all this territory. But remember, the promise was, I am giving the land of Canaan to your descendants, Abraham. And in chapters 13 through 21, they divide the land up. They give certain portions. It's very boring to read. I'll just tell you that right now. It is not exciting reading. And we'll just look. Joshua's old, advanced in years. I want you to do this. And they just start going through the territories. And
They literally draw borders. It says you'll go from Gezer to Ekron to Lachish, and they do this for each of the tribes. And there are 12 tribes. And it takes a long time to go over this. But what he's doing is showing that God fulfilled his promise. Not only did we capture the land, we divided it up among the tribes. And this tells us the focus of the book of Joshua is not the history of Israel conquering Canaan. It's the story of God fulfilling his promise. The very next book, Judges, they're going to go back over this stuff again. And he's going to go in more detail. And that one is much more, Judges is much more concerned with how it was actually done. Joshua is concerned with the results, the giving of the land. 12 बाब के अंदर हमें ये मिलता है कि यहोशुआ ने जो है किन किन जगहों पर फतह को हासिल किया और कौन कौन से बादशाह को जो है उसको शिकार किया और कब्जा करते गए, सारी तफसील हमें मिलती है। और इसी तरह से 13वें बाब के अंदर हमें मिलता है कि इन सारी जगहों को, इन इलाकों को, इस मुल्कों को जिनको यशवा ने फतह किया था, उनकी तकसीम की। तो हमें 13वें बाब में उसकी तकसीम मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि याकूब के 12 कबीले थे और उन 12 कबीलों को मुख्तलिफ इलाके दिए गए कि तुम्हारा हिस्सा ये है, तुम्हारा हिस्सा वो है। इस तरह से हमें 13वें बाब के अंदर उसकी तकसीम की तफसील मिलती है कि किस किस तरह ये सारे हिस्से उनको तकसीम किए गए। लेकिन यशवा की किताब से हमें सिर्फ यही नहीं जानना कि उन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया और किस तरह से फतूहात हासिल की और किस तरह तकसीम हुई, लेकिन हमें ये जानना है कि किस तरह से खुदावन अपने वादे में सच्चा रहा और खुदावन ने अपने सारे वादों को जो है सर्च करके दिखाया। फर्मा बरदारी जो है करने पे खुदा ने उनको ये सारी चीजें दी। तो आज हमें भी खुदावन की फर्मा बरदारी करनी है, तब हम खुदावन से जो है उन सारी चीजों को जो खुदावन हमारे लिए रखता है, खुदावन से हासिल कर सकते Okay. So, way back at the beginning in chapter 1, the tribes who wanted to stay on this side of the Jordan approached Joshua and said, "We like it over here. We'd like to stay here." And Joshua said, "Okay, but you got to come over and help us capture the land. And once we've done all that, then you can go back." And they said, "We agree to that." And that's what happened here. In chapter 22, these tribes come back. And then in chapters 23 through 24, Joshua renews the covenant. And this is a big deal. And I want to spend a little bit of time talking about that. तो हमें 13वीं और 14वें बाब के अंदर मिलता है कि स्टार्टिंग के अंदर, बिल्कुल शुरुआत में जब उन्होंने यरूशलेम को फतह करना शुरू किया था, तो फतह करने के बाद हम देखते हैं कि बैत शान के अंदर बहुत सारे कबीले जो है, जब इन सारी फतूहात के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें बैतशान में ही रहने दो, हम यहाँ स्टे करना चाहते हैं। लेकिन यशवा ने उनसे कहा कि नहीं, तुम अभी जंग में हमारा साथ दो, आगे जब हम सब फतह कर देंगे तो फिर तुम वापस उसी जगह पर जाकर क्याम कर सकते हो। तो फिर हम देखते हैं कि यशवा ने उनको वापस भेज दिया। आगे इसी तरह से 22वें और 23वें बाब के अंदर जो है हमें बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलती हैं कि ये वापस जो है वो चले गए, उन्होंने वहां पर कयाम कर दिया और आगे बहुत सारी फतूहात का जिक्र भी हमें मिलता है। All right. So in chapter 23, Joshua was at the end of his life.
They've been in the land. And this is what he tells us. A long time afterward, when Yahweh had given rest to Israel from all their enemies, Joshua is old, well advanced in years, he's about to die. And this is what Joshua says. I'm now old, well advanced in years, and you've seen all that the Lord your God has done to all these nations for your sake. For it is Yahweh your God who has fought for you. I want you to hear Joshua's words. When you are fulfilling your calling, remember, it is not you, it is Yahweh, our God, Jesus. Jesus, our God, who does this work for us. Remember that. 23वें बाब के अंदर यशवा जो है हमें यहाँ पे मिलता है कि किस तरह से जब उसने सारी फतूहात कर दी तो फिर उसने जो है इसराइली को कहा कि मैं अब बुढ़ा और उम्र रसीदा हो गया हूँ। और सारे उसने बुजुर्गों और सरदारों काजियों को बुलवा कर कहा कि जो कुछ खुदावन तुम्हारे खुदा ने इन सबब से कौमों के साथ किया वो तुम देख चुके हो। सारी फतह सारी चीजें तुमने देख ली है कि खुदावन तुम्हारे लिए आप जंग करता रहा। तो फिर क्या होता है कि वो उनसे कहता है कि देखो मैंने कुर्रा डालकर उन बाकी कौमों समेत जिनको मैंने काट डाला यर्दन से लेकर मगरी की तरफ बड़े समंदर तक कबूलों कबीलों की मिरास ठहराता हूँ। और यशवा ने ये सारी चीजें उनकी हैंड ओवर की उनको बताया। यशवा निहायत उम्र रसीदा हो गया। हम देखते हैं कि उसने अच्छी उम्र पाई और फतह को हासिल किया। तो आज जब हम खुदा के साथ चलते हैं खुदा उनके साथ वफादार रहते हैं अपने ताबेदारी उसको दिखाते हैं तो खुदावन जो है उन सारी फतूहात से हमें हमकिनार कराता है। लेकिन हमें ये करना है कि खुदावन के साथ वफादार रहना है तो फिर सारी वादे की हुई चीजें खुदावन हमें देगा। So he talks to him. It's a long speech. And he says two things. God's given you this land. If you turn back and join the survivors of the nations left here among you, and you intermarry with them, so you marry their women and they marry yours, know assuredly that Yahweh your God will not continue to drive out these nations before you, but they'll become a snare and a trap. But now, if you will love the Lord your God with all your heart, he will be faithful to you. I'm getting down to where he says this. And so what's interesting, he phrases it in terms of not obeying the law, though that includes that, but loving the Lord your God. And then, okay, go ahead, do up to there, Maria. यहाँ पे 23वें बाब के अंदर फिर यशवा जो है अपने मरने से पहले एक बहुत लंबी जो है वो स्पीच करता है उनको बताता है इसराइलियों को कि तुमने क्या क्या करना है। और यहाँ पर वो उनसे कहता है कि तुमने गैर कौमों के अंदर शादी ब्याह नहीं करने खुदावन का वफादार रहने है ताबेदार रहना है उसके हुक्म को मानना है। फिर हम देखते हैं कि यशवा लोगों से कहता है कि खुदावन के हुक्म को मानना है खुदावन से मोहब्बत करनी है उससे प्यार करना है। उसने कहा कि खुदावन तुम्हारा खुदा ही उनको तुम्हारे सामने से निकालेगा। अगर वो खुदावन के साथ रहेंगे तो खुदावन ही तुम्हारी नजर से उनको दूर करेगा और तुमको उस मुल्क पर काबिज कराएगा जिसको खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमसे देने को कहा है। फिर हम देखते हैं कि 24वें बाब के अंदर यशवा जो है इसराइलियों को यशवा ने इसराइली कबीलों को सिकम में जमा किया। इसराइल के बुजुर्गों और सरदारों काजियों को बुलाया कि वो खुदावन के हुजूर हाजिर हों और उनको ये सारी चीजें समझाई कि खुदावन खुदा से प्यार करना खुदावन खुदा के साथ वफादार रहना ही सबसे अहम बात। So in the last chapter, Joshua takes the leaders of the tribes of Israel and they go up to Shechem, this town right here. It's actually pronounced Shechem. And it has two hills with it. And they put one group on one hill and another group on the other hill. And he makes them
redo the covenant. We're going to redo the covenant. And he walks them through it, and including the covenant means keeping the law. And as we all know, that's what's going to destroy Israel later, is they won't keep the law. But he re-establishes the covenant with them, says you will keep the law. And he sets it up and he presents it to them and says, will you keep the law? And they say, yes, we will. But then let me just read it for you. It'll be easier. Right here, Joshua's talking to them. Now, therefore, fear the Lord, serve him in sincerity and in faithfulness. I'm going to change translations. Excuse me for a second. Now, therefore, fear the Lord, serve him in sincerity and faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve Yahweh. And here's the kicker. And if it is evil in your eyes to serve Yahweh, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the God of the Amorites whose land you now dwell, that is the Canaanites. But as for me and my house, we will serve the Lord. That's what I have here. This is a verse worth memorizing. If you've never memorized Joshua 24:15, do so. If it is evil in your eyes, Joshua talking to the Israelites, to serve Yahweh, choose for yourself today whom you'll serve, whether the gods that your fathers served when they were in the region across the river, that is, when they were captured in Egypt and all that, or the gods of the Amorites in whose land you're now dwelling. You have to choose. You're going to serve somebody. Choose. However, as for me and my house, we will serve Yahweh. Go ahead, Maria. 24वीं बात की पहली आयत में फिर यशवा क्या करते हैं कि अपने सारे बुजुर्गों को, सारे जो है जितने बुजुर्ग हैं, बड़े लीडर्स हैं, सबको जमा करते हैं और उनसे जो है उस सारे अहद की कवानीन को दोहराते हैं। उस अहद कवानीन को जो खुदावन ने शरीयत दी थी उन सबको दोहराते हैं। कहते हैं कि तुम खुदावन को भी चुनो और खुदावन की इबादत करो। वो कहते हैं बस तुम खुदावन का खौफ रखो, नेक नियत से सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर करो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावन की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुम्हें बुरी मालूम होती है तो आज ही उसे जिसकी तुम प्रस्तिश करते हो चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों की देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम खुदावन ही की प्रस्तिश करेंगे। 24 बाब की 15 आयत, इसको आपने याद करना है। ये सर ने कहा है कि इस आयत को आप पढ़ें भी और याद भी करें। और याद ये करना है कि जिस तरह दूसरे मुल्कों के देवता थे, बादशाह थे, देखिए सब मर गए, सब तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन जिसने खुदावन की प्रस्तिश की, जो खुदावन के साथ वफादार रहा, खुदावन ने उनको पार लगाया, खुदावन उनके साथ रहा, उनको ये मुल्क दिया। अब ये सारी बातें यीशु उनके सामने रखता है और उनसे कहता है कि चूज कर लो, तुम चुन लो अपने लिए कि तुम किसकी प्रशिश करना चाहते हो, क्या उन देवताओं की जो तुम्हें बचा नहीं सकते, या फिर जिंदा खुदा की जो हमें बचाता है और छुड़ाता है। तो ये आयत हमने एक तो याद रखनी है, 24 बाब की 15 आयत, कि हमें खुदावन को चुनना है ताकि वो हमारा बादशाह हो, हमारा खुदावन हो, और हमें आगे भी हमारे सारे मामलात में मदद करे और आगे लेके जाए। Okay, so we are finished with the book of Joshua, and we're going to move into the book of Judges next week. But you have an assignment. I want you to memorize Joshua 24:15
that one verse. I want you to memorize it. You pick your language, what you're going to memorize it in. But when we start class next week, I'm going to have you pull out a piece of paper and I want you to write out that verse from memory. It's worth memorizing. I want you to memorize that verse. Maria, you want to tell them that? यस श्योर सर। आगे जो है हम ये हमारे जो अहम बात थे, हम तकरीबन ईश्वर की किताब को खत्म कर चुके हैं। हम नेक्स्ट वीक जो है फिजात की किताब को पढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए सर ने जो है होमवर्क दिया है, जो आपको लाजमी करना है कि आपने एक पेपर पर एक तो याद करना है, लिखना तो है ही, 24 बाप की 15 है। आप उर्दू में लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे, इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू में लिखे तो ज्यादा बेहतर है कि अच्छा हमें हमारी जुबान में समझ आएगा। ये आयत आपने लाजमी याद करनी है जुबानी, और जुबानी ही लिखनी है। अपना होमवर्क जो है आप सेंड कर सकते हैं, और फिर इस आयत को जो है लिख के सर को सेंड कर देगा। फिर हम नेक्स्ट वीक जो है किजात की किताब को पढ़ेंगे, क्योंकि ये आयत जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकजी आयत है यशवा की किताब की, कि हमें खुदावन को ही चुनना है, क्योंकि खुदावन हमारा बादशाह है, हमारा बाप है, इसलिए हमें खुदावन को चुनना है। तो ये मरकजी आयत को हमें लाजमी याद रखना है, ये हमारा होमवर्क भी है। अगर आप चाहें तो अभी क्लास के बाद फौरन कर लें, वरना अक्सर नेक्स्ट वीक तक भूल जाते हैं हम, क्योंकि और बहुत सारी चीजें होती हैं। Okay. So, oh, well, I'm over here. So please memorize that verse for next week and be able to write it down, because you are going to serve Yahweh. You're going to make that decision to serve the Lord, serve Jesus. Because we live in a world where people are choosing gods left and right, and they're not choosing the right ones. But you choose the right ones, and you be an example to your friends and your neighbors. Okay? तो आपने All right. 24 बाब की 15 आयत को लाजमी तौर पर याद करना है, बिल्कुल याद करके लिखना है। आप जो है ये लाजमी लिख के शेयर करिएगा, क्योंकि आपके चारों अतराफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ खुदाओं की प्रशिश करते हैं। मुख्तलिफ उन्होंने अपने लिए देवता चुने हुए हैं, लेकिन हम वो कौम है जो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं और उसकी प्रशिश करते हैं। तो हमारे लिए जानना समझना जरूरी है कि हमने किसको चुना है, क्योंकि हमने जिंदा खुदा को चुना है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। Okay. And I don't care if you memorize it in English. You can memorize it in whatever your language is, Urdu or whatever. Just memorize the thing. Okay. 11:10. We got almost a full hour. Sorry, we had the technological goof up, but we got it worked out in the end. So, all right. See y'all next week. Okay. So, yeah. Okay. Any questions? No. Okay. Well, love you guys. I'll see you next week. Thank you, sir. That verse was very powerful. As for me and my house, we will serve Yahweh. Yes. Good. Thank you, sir. I appreciate that. All right.